So, very good afternoon to all, and welcome all to today's session. I'm sure my voice is audible to you all. Just type yes on the chat box. So, अगर मेरी voice and screen visible है, so just type yes on the chat box. We'll wait for a minute and so to for the confirmation, and then we will start the session. We'll wait for a minute and so. So thank you so much for the confirmation. So once again, welcome all to today's session. That's today's being Monday, and this week is the monthly expiry of Nifty 50, Bank Nifty, and the stocks. So currently talking about the Nifty 50, which is opened at around that was 22,940, and high was 23,007, and the low was 22,826. Currently it is trading at 22,908. Talking about the Bank Nifty, it is trading around this 48 166 right now. The open was 47,881, and the high was 48,248, and the low was 47,844. So right now the market is quite volatile, and because of the budget is coming in, that's on 1st Feb. And do join us for the session also. That's a post budget analysis on 3rd Feb at 4:30 p.m. So I'm having with me Mr. Karan Pai, who is going to give you the view on the today's market outlook and the weekly index that one can look out for. That what is the support and resistance? What are the sectors that one can look out for, and the top stocks and the bottom stocks. So with this, I'll hand over the session to Mr. Karan Pai. Karan, all over to you. थैंक यू रोहित सो काफ़ी इवेंटफुल वीक रहा है जो लास्ट वीक अगर आपने देखा होगा तो दो इट वाज बेसिकली कंसोलिडेटिंग या थोड़ा एक ब्रेकडाउन के बाद इट वाज कंसोलिडेटिंग बट देन एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होते हुए हमें दिखाई दी है सो बिफोर गेटिंग इनटू व्हाट द इंडेक्स इज डूइंग राइट नाउ आई विल जस्ट क्विकली रन यू थ्रू व्हाट हैपेंड दिस मॉर्निंग एंड हाउ द एशियन मार्केट्स फेड हाउ द एशियन मार्केट्स ओपन सो अगर आप निकाय देखोगे निकाय एक नेगेटिव नोट पर थोड़े पॉजिटिव नोट पर ओपन हुआ था बट बाय द टाइम फुल फ्लेज ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया इट वेंट इनटू रेड एंड अभी अगर आप देखोगे तो निकाय इज डाउन अबाउट 0.9%. वहीं पर हैंगसेंग कॉस्पी जो थे वो थोड़े पॉजिटिव थे. यूएस स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्राइडे के सेशन में देयर वाज अ बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एंड अगर आप देखोगे एस&पी में नैस्डैक में ऑल इन ऑल दे वर अ बिट नेगेटिव 0.6% नेगेटिव एंड हुए थे. Now, as to why this happened, so there was a news about a new open source AI LLM that came from China, and that was basically running at a fraction of the cost as compared to OpenAI or the other LLMs. So, उसका एक negative effect हो सकता है कि that is one of the reasons as to why the Asian markets are trading a bit negative today. और वाई द यूएस मार्केट्स एंडेड ऑन अ नेगेटिव नोट. एंड अगर आज के दिन में अगर आप देखो गिफ्ट निफ्टी सुबह ही बता रहा था कि देयर इज गोइंग टू बी अ गैप डाउन एंड जो ओपन है दैट वाज इट वाज हिंटिंग दैट इट इज गोइंग टू बी बिलो द 23,000 मार्क एंड निफ्टी जस्ट फॉलोड द क्यूज. एंड अगर आप देखोगे निफ्टी का आज का ओपन जो था दैट वाज अराउंड 22,940 एंड जैसे ही वो 22,940 के पास ओपन हुआ इट टेस्टेड दैट 23,000 मार्क. सो अगर आप हाई देखोगे अभी तक का मैं बोल रहा हूँ बिकॉज in the last 15 minutes there has been some sort of recovery in the index. 23,007 का उसने हाई मारा and then it tested a low of 22,820. So there is a lot of volatility in the index at this point of time. So that is something that you need to keep in mind, especially if you are trading options and especially if you are an option seller. यहाँ पर कैसा है कि because the volatility factor has gone up, the probability of your volatility factor affecting your option prices significantly goes up. So जब volatility मतलब at least on the intraday point of view, from an intraday point of view volatility है. So now if you see तकरीबन 200 पॉइंट का मूव अभी तक हुआ है taking into consideration the highs and the lows. यहाँ से what do we see? So now in our previous webinars the first level that we had spoken about was this zone
that was between 23,400 23,500, that was taken out, it was retested, and just in retest हुआ there was a massive fall. Then जो big figure था 23,000 का, जो psychological level था 23,000 का, that was important. So वहाँ से भी आज हम लोगों ने नीचे ब्रेक किया है. So आने वाले सेशंस में the 23,000 23,100 जोन जो है वो काफ़ी क्रूशल होगा. एंड अगर यहाँ से हम लोग को फॉल दिखाई दे रहा है, सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग एट द मोमेंट वेयर वी आर स्टैंडिंग, if you see the highs of around April 2004 and May 2004, April 2004 का जो हाई था इंडेक्स का, that was around this zone 22,800 22,600, so around that zone 22,800 का, वहां पर आज का लो है. सो वी आर एट द मोमेंट प्लेस्ड एट अ वेरी क्रूशियल जंक्शन. क्यों क्रूशियल जंक्शन? क्यों? बिकॉज 23,000 का जो प्रीवियस सपोर्ट था वो टूट चुका है एंड नाउ इट हैज कम डाउन टू 22,800. यहाँ से इंडेक्स क्या ट्रेजेक्टरी लेता है, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी. एंड कहीं ना कहीं आई एम अज्यूमिंग ऑप्शंस, if you look at the OI data, we would get a much better idea as to what the traders are assuming at the moment or what the traders are thinking at this point of time. सो चार्ट पर हम लोग को दिखाई दिया कि 23,000 ऑन द अपसाइड, 22,800 22,700 ऑन द डाउन साइड इज अ बिट क्रूशियल. Quickly take a look at the intraday charts as to what those are saying. एंड 75 मिनट या 1 आवर चार्ट पर अगर आप देखोगे, सो 75 मिनट बिकॉज इट प्रॉपरली डिवाइड्स ऑल द कैंडल्स. सो अगर आप 75 मिनट का चार्ट देखोगे, सो यहाँ पर दिख रहा है कि 23,054 से 23,100 23,100 जो है, that could be a very crucial resistance for the day. Now there are 2 points here. एक तो it was a multiple touch point earlier, and then आज का जो gap है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक hurdle बनते हुए दिखाई देगा. On the downside, of course, अगर session low breach होता है, then we might see fresh lows. I mean, it's a no-brainer, but वो point करना थोड़ा important है, because as I shown you on the daily charts, session low आज का it is at a previous high, जो there were multiple resistances at that point of time. जैसे ही वो level निकला, we had seen it move higher, and I think this was मई 24 से लेके वो लेवल जो है वो आज हमें दिखाई दे रहा है. विल क्विकली लुक एट व्हाट द ओआई डेटा इज टेलिंग. जस्ट गिव मी अ सेकंड. Go to the NSE website, type in Nifty, open the option chain for the monthly expiry, obviously. So if we just scroll down, massive writing call side में जो है 23,000 का है. Now I'll be willing to give this level a second chance because ये ATM के आसपास ही आता है. So if you see 23,100 पर writing है, 23,200 पर writing है, 23,300 पर writing है. So basically every 100 points there is a writing. So the probability of the index heading higher above say 23,400, because 23,400 is also a crucial level. So I'll just show it to you on the chart. So 23,400 is basically this zone. ये जो zone है वो लोगों को लग रहा है कि काफ़ी important resistance होगा provided 23,000 is broken. So वहाँ पर जो है फिलहाल हमें writing बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है. And as we go higher, जो writing की intensity, I mean जो writing का the number of contracts that we see, the OI data accumulation अगर आप देखोगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा है. So for example 23,500 पर you have like 3.5 lakhs worth of open interest. अगर मैं पुट साइड में देखूं, then 22,900 again this the chart that I'm showing you is spot, and ये जो है that is based on futures. So somewhere around 22,800 पर है, 22,700 पर है, 22,600 पर है. Again 100 points के इसमें है brackets में है, but then on the downside I think somewhere in between 22,800 22,700 is also the level that the traders are looking. So broadly एक range bound sort of move is what will build up on one side if either of these levels are breached. Now we'll quickly run through what the sectors are doing from this at this point of time. अब मैं at this point of time बोल रहा हूँ because historically we have seen whenever I mean in the last presidential term, जब Donald Trump was the POTUS,
we saw massive volatility because of his tweets or because of his comments. And ये अगर आपने ट्रैक किया होगा तो ड्यूरिंग इन द प्रीवियस वीक ऑल्सो व्हेन ही स्पोक अबाउट हिम प्रेशराइजिंग और हिम एडवाइजिंग द फेड टू कट रेट्स, आपने मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी देखी थी. दैट वाज द सेम टाइम अराउंड विच S&P 500 वाज वेरी क्लोज टू इट्स लाइफ टाइम हाइज, गॉट वेरी क्लोज टू इट्स लाइफ टाइम हाइज. मेजर रिवर्सल उसमें हमें दिखाई दिए थे. अगर अभी सेक्टर्स की बात करें तो दीज आर द 12 सेक्टर्स दैट वी ट्रैक, दैट वी थिंक दैट मूव द मार्केट. सो मोस्ट ऑफ द ऑल ऑफ देम आर इन द रेड. एक FMCG छोड़ के विच इज वेरी on a very क्या बोलते हैं बॉर्डर लाइन पर है थोड़ा, बट देन तो इट इज डाउन अबाउट -1%, 0.1%. मेजर बीटिंग जो हुआ है दैट इज इन मीडिया, एनर्जी, IT स्टॉक्स. मीडिया अगर आप देखो तो तकरीबन 3.5% से ज़्यादा डाउन है. IT अगर आप देखोगे तो तकरीबन 2.5% से डाउन है. फार्मा अगर आप देखोगे वो भी तकरीबन 2.5% से डाउन है. सो कहीं ना कहीं ये सारे स्टॉक्स दे सीम टू बी ड्रैगिंग द इंडेक्स लोअर. नाउ विल क्विकली रन यू थ्रू व्हाट द निफ्टी 50 stocks are doing at this point. So breadth अगर आप देखो तो 41 stocks are declining and only 9 seem to be in the green at the moment. So which are the stocks that are actually dragging the index? So we know what the sectors are. So I'm assuming it should be from those sectors. So yes, LTIM, IT जैसे हम लोगों ने देखा था, एनर्जी से पावर ग्रिड है, फार्मा से डिविस लैब है, टेक एम, विप्रो, टाटा मोटर्स, they seem to be the laggards for the day. Now down about, sorry, yeah, down about more than 2.4%. So, So Karan, yeah, for this media, as you mentioned, the media and the IT sectors are quite down. So, can we see in the option chain की that कौन-कौन से sectors specific stocks है मीडिया में कि कौन-कौन से down है the high percentage? या सो अगर हम लोग सेक्टर वाइज देखें तो कमिंग टू दैट, सो अगर हम लोग सेक्टर वाइज देखें So meanwhile, the current opening the sector wise, now talking about the Nifty 50 option chain, that is जैसे कि करण ने बताया कि सबसे ज़्यादा 23,800 पे as per the data right now is like on the put side is the highest, like the OI, that's the 50 lakhs plus 9 lakhs odd addition हुआ है. And talking about this 23,300, that is 69 lakhs is already there and plus 16.58 और ऐड हुआ है इसके अंदर. Now coming to the Nifty media, these are the top sectors, like these are the top constituents. stocks. Yeah. So अगर आप इसमें देखोगे समथिंग लाइक सारेगामा इज डाउन अबाउट 7.5, अबाउट 6%. Zeal, then मतलब अगर आप एडवांस डिक्लाइन इसमें देखोगे तो 10 स्टॉक है इंडेक्स में, सारे के सारे नेगेटिव में चल रहे हैं. Okay. We'll quickly see what Nifty. IT stocks are doing. So IT में भी अगर आप देखोगे 10 stocks है, 10 के 10 नेगेटिव. कहीं जो सेंटिमेंट है रोहित, it's a bit on the negative side is what we are seeing because 12 सेक्टर्स में अगर आपने देखा तो 12 के 12 नेगेटिव में थे. You dig deep into the constituents, most of them are in negative. The only sector that was on the border line यहाँ वहाँ जो थोड़ा हो रहा था that was FMCG. and FMCG में आप देख सकते हो 11 डिक्लाइनिंग है, 4 एडवांसिंग है एंड देयर इज 1 अनचेंज. सो उसमें जो है अगर आप मेजर लेगार्ड्स देखोगे FMCG में भी तो समथिंग लाइक रैडिको खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट्स, PGHH, they seem to be beaten down a lot. And जो कंज्यूमर स्टेपल्स है जैसे ब्रिटानिया हुआ, डाबर हुआ, हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, नेस्ले हुआ, बेसिकली जो एक डिफेंसिव स्टॉक्स हैं. सो इनवेरिएबली डिफेंसिव स्टॉक्स में होता कैसा है कि जब आपका मार्केट इन जनरल गिरता है, ये जो स्टॉक्स है, बिकॉज इट इज अज्यूम्ड दैट ये जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन दे आर गोइंग टू कंटिन्यू सेलिंग. सो दिस इज अ बेसिक अजम्पशन, दिस इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स गिव यू. सो ये जो स्टॉक्स हैं अगर आपको पता होगा, आई मीन आई एम प्रीटी श्योर, सो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय दीज कंपनीज आर समथिंग दैट वी यूटिलाइज ऑन अ डेली बेसिस, बिस्किट्स हुए या शैम्पूज, वॉट एवर इट इज. सो दे आर बेसिकली कॉल्ड डिफेंसिव स्टॉक्स. सो ये जो डिफेंसिव स्टॉक्स है दे सीम टू बी परफॉर्मिंग वेल टुडे. ITC is also one of them, but at the moment अगर आप देखोगे it's down 0.2%. But Britannia, Dabur, Hindustan Unilever, Nestle, they seem to be holding. So what happens is invariably whenever there is an uncertainty in and जब भी आपका market in general गिरता है, money tends to flow into these stocks. Now again, I'll not outright say that it will definitely flow into these stocks, but general tendency is this कि because comparatively अगर आप देखोगे बाकी stocks, something like a real estate, it's not something that you consume daily, but something like bread and biscuit is something that you would consume daily. Daily, correct. So that is why ये stocks में जो है
इनवेरिएबली पैसा जाता है अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ ब्लैक स्वॉन इवेंट जहां पर योर कंजम्पशन कंप्लीटली कम्स टू एन हॉल्ट व्हिच अगेन कोविड में भी आपने देखा था कंजम्पशन ये सब चीजों का तो थोड़ा हिट हुआ था बट उतना हिट नहीं हुआ था एज कम्पेयर टू से कार्स एंड रियल एस्टेट. So that is from the sectors. What we'll quickly do is also run you through what the bank nifty is doing at the moment. But before we go to the bank nifty, if you can just showcase the nifty 50 again. Yeah. I wanted to मैं अपने participants को दिखाना चाहता हूँ कि निफ्टी 50 का जो चार्ट आपने स्टार्टिंग में दिखाया था कि एक लाइक अगर थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं सो दैट लाइक अ वन डे चार्ट would be good enough. Yeah, one day. And yes, so if you can just zoom out. सो एक जो उसने लेवल बनाया था जो मई से लेवल आया था जो ट्रेंड आया था दैट वाज लाइक द शोकेसिंग लाइक द कंटिन्यूअस अप ट्रेंड. या नाउ आफ्टर दिस 26,000 तक वी हैव सीन द लेवल एंड नाउ उसके बाद अभी इट इज कमिंग डाउन एंड अभी जो रेसिस्टेंस है दैट इज 22,900 पे जो एक तरह से लास्ट ईयर व्हाट यू राइटली सेड दैट इज लास्ट ईयर मई जून के आसपास बना था. बट एक जो मेजर अभी अपना सपोर्ट अगर बन सकता है दैट इज 22,900 पे इफ यू कैन जस्ट. Yeah, 22,800 के पास है 22,800 22,700 का जोन है. So I would always prefer giving it a small buffer. So 100 points का buffer for Nifty would not be a big deal. के पास 22,650 के पास is where we might see supports coming in, and also the OI data is telling the same thing. So अगर OI data आपने देखा होगा so every 100 points पर there is a writing. So मतलब at this point probably the traders are thinking that we are going to see a bit of a range bound move between probably 22,700 on the downside and probably 23,100 23,200 के आसपास. What is what a beautiful chart it is. Like if you compare, अगर मैं compare करूँ निफ्टी 50 का chart with the RSI also, it was into the overbought zone. अगर किसी ने हमारे RSI का this indicators attend किया होगा video, then they will be understanding what RSI stands for, and continuously after the month of October or the November. Correct. So oscillation जो था RSI का it was happening between 40 80 40 80 40 80. And now it has actually gone from being oscillating between 40 and 80 to something like this. So अभी अगर आप देखोगे it is moving between 60 and 30. So this is a classic example of what we call as a range shift. रेंज शिफ्ट में सो RSI नॉर्मली लोग कैसे देखते हैं कि या तो फिर ओवरबॉट देखते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है या पर्टिकुलर स्टॉक होता है, इट डज नॉट गो ऑल द वे टू द ओवरसोल्ड लेवल. सो दैट इज व्हेन यू हैव टू लुक फॉर सिनेरियोज लाइक दीज. सो कभी कभी कैसे होता है कि आपका 30 पे आ गया या 40 पे आ गया, देन इट रिवर्सेस बैक. तो आपका RSI जो है मतलब बता रहा है कि देयर इज अ चांस दैट इट माइट नॉट, द RSI इंडिकेटर माइट नॉट गो बिलो 40. वहीं पर अभी देखिए अगर आपको समझिए ये जब ये 60 के पास था एंड तभी प्राइस एक्शन में आपको काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था यहाँ पर कि देयर इज अ चांस ऑफ इट गोइंग हायर, दो देयर वर रेजिस्टेंसेस, बट एट दैट पॉइंट वन माइट एक्चुअली होप जो होता है कि मैंने पोजीशन ले रखी है तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा. कहीं ना कहीं ट्रेडर्स यहाँ पर थोड़े फंसे होंगे बिकॉज RSI कुड नॉट गो अबाउ 60. एंड अभी अगर पिछले कई दिनों से आप देखोगे इट इज इवन वो जो रेंज जो है वो और थोड़ा श्रिंक हो रहा है. इट वेंट फ्रॉम बीइंग 60 टू बीइंग 50 एंड नाउ इट इज डाउन टू 40. सो इट इज नाउ ऑसिलेटिंग बिटवीन 40 एंड 30. सो इसे मतलब जितना आप और ग्रैन्युलर करोगे उतना ज्यादा आप ग्रैन्युलर जा सकते हो. बट वन थिंग बिफोर गेटिंग इनटू द ग्रैन्युलैरिटी, it becomes more and more confusing as you add or bring down the time frame even further. So for example, if Karan, like this was like for the person like जो निफ्टी 50 फ्यूचर्स में सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं तो उनके लिए ट्रेंड बहुत ज्यादा एक सामान्य रहता है कि हाँ ट्रेंड कैसे देखना है, बिकॉज अल्टीमेटली इन टेक्निकल्स माना गया कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड एक्चुअली. ओके, नाउ इफ आई सी दिस चार्ट एज अ पोजिशनल, क्योंकि अभी ये थर्सडे को एक्सपायरी रहेगी, सो एक पोजिशनल के बेसिस में अगर मैं 30 मिनट्स का या 50 मिनट्स का चार्ट देखता हूँ तो व्हाट शुड बी माय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस राइट नाउ. So मैं 75 मिनट का चार्ट देखना प्रेफर करता हूँ बिकॉज इट गिव्स यू अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन नॉइज एंड ट्रेंड. करेक्ट. सो अगर मैं 75 मिनट के चार्ट पर देखूं तो मुझे लग रहा है कि समवेयर अराउंड इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आएगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड 23,100 और आई विल गिव इट अ बिट ऑफ अ बफर 23,200 का. एंड देन अगर नीचे की तरफ अगर मैं देखूं तो आज के जो सेशन का लो है या जो हम लोगों ने डेली चार्ट पर जो देखा था 22,800 का जो पहले रेजिस्टेंस था जो अभी सपोर्ट बन रहा था जो आज सुबह का लो था, दैट विल बिकम माय क्रूशियल सपोर्ट लेवल. So this is basically like Karan, as you rightly said, that is अगर मैं ये वीक का जो अभी अपना ये वीक अपना लास्ट वीक स्टार्ट हुआ था, that is 20th December, वहां से लेके
अभी तक, दैट इज 24th, इट वाज इन द रेंज बाउंड सिचुएशन पे. या दो देर वॉज अ बिट ऑफ अ नेगेटिव ड्रिफ्ट, बट हाँ इसे ब्रॉडली एक रेंज बाउंड बोल सकते हैं. एंड देन दिस मॉर्निंग वी हैड अ गैप डाउन, एंड वो जो लोअर बाउंड है वो रेंज का वो निकल गया. Okay, now if the person wants to look into the intraday के intraday levels में क्या देखते हो, एक लास्ट अगर आप व्यू दे पाए कि that okay what should be the positional support and resistance as per the data right now, ये क्या बोल रहा है 75 minutes में. पोजिशनल व्यू अगर मुझे लेना है तो अगेन इट्स द सेम थिंग, 22,700 का सपोर्ट रहेगा मेजर. एंड अगर आपको बुलिश व्यू बनाना है देन यू हैव टू वेट फॉर द इंडेक्स टू टेक आउट 23,000 23,100. एंड वो जो ब्रेक रहेगा 23,100 का, इट शुड बी बैक बाय मोमेंटम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट इज जस्ट गोइंग टचिंग गोइंग टचिंग गोइंग टचिंग, वैसे नहीं होना चाहिए. इट शुड टच ब्रेक एंड देन वो जो 23,000 का इट शुड एक्ट एज अ सपोर्ट. ओके, एंड अगर 15 मिनट्स में अगर मुझे इंट्राडे लेवल्स पे देखना है या 5 मिनट्स, 15 मिनट्स पर अगर आप देखोगे तो 23,000 becomes a crucial resistance, and नीचे में again the support remains the same, 22,800 22,800. Okay. So if you can just showcase about the Bank Nifty also, because Bank Nifty का भी अभी ये मंथ में एक्सपायरी है. बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, सो या बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे रोहित, सो कंपेयर टू निफ्टी, just based on the price action at the moment, it seems to be a slightly better chart because though it had a negative opening, उसमें जो है पुल थोड़ा अच्छा आया है ऊपर की तरफ. मैं अभी आपको बोलने वाला था कि बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा एक वॉलेटाइल रहता है, सबसे ज्यादा मोमेंट्स हम लोगों को यहाँ पे मिलता है. हाँ. लाइक अगर मैं अक्टूबर की बात करूँ तो 54,000 से लेके ऑलमोस्ट 48,000, ऑलमोस्ट 6,000 तक का पॉइंट का मोमेंट्स रहा है अक्टूबर से लेके अभी तक. तो जिसने अगर फ्यूचर्स में खेला होगा तो ऑफ कोर्स लाइक दे वुड फॉलो दिस ट्रेंड कि दैट हाँ फ्यूचर्स में क्या बैंक निफ्टी चल रहा है इनफैक्ट. बट ऑल्सो बैंक निफ्टी में अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे 200 डे SMA इसने ब्रीच किया था. सो अगेन जो मूविंग एवरेजेस जो होते हैं व्हाई दे प्ले अ क्रूशियल रोल. सो इफ यू सी जुलाई 22 में बैंक निफ्टी ब्रोक अबाउट द 200 डे SMA. जुलाई 2022, माइंड यू 2022. एंड एवर सिंस देन 2000 वो जब भी 200 डे SMA के पास आता था इट यूज्ड टू एक्ट एज अ सपोर्ट, एक्ट एज अ सपोर्ट, एक्ट एज अ सपोर्ट. उसके बाद 2000 Jan 25 में इट ब्रोक बिलो द SMA. सो स्ट्रक्चर जो है ब्रॉडर टर्म का इट कंटिन्यूज टू रिमेन वीक बिकॉज 3 साल बाद उसने मूविंग एवरेज नीचे तोड़ा है. एंड 200 डे SMA इज कंसिडर्ड टू बी द क्या बोलते हैं बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो दिखाता है वो. सो ब्रॉडली इसका स्ट्रक्चर वीक है, बट एज वी गेट डीपर, मतलब मैं अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाऊं तो एंड इफ आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट विद निफ्टी एट द मोमेंट वी सीम टू बी पोजिशन बेटर बैंक निफ्टी. सो अगर इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं बात करूं इसमें भी बिकॉज आफ्टर अ नेगेटिव ओपन, इसका अगर आप लो एंड ओपन देखोगे 40 पॉइंट का डिफरेंस है. एंड फॉर समथिंग दैट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 47,000, 40 पॉइंट्स इज लाइक peanuts for it, right? Yeah. So मतलब इसे हम लोग लगभग बोल सकते हैं कि इट वाज अ ओपन इक्वल टू लो काइंड ऑफ पैटर्न. वहां से हमें एक सिग्निफिकेंट पुल दिखाई दे रहा है अभी ऊपर एज ऑफ नाउ मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ बिकॉज अभी जो है जो ग्लोबल फैक्टर्स है या जो बाकी फैक्टर्स है इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द US प्रेसिडेंट, इंक्लूडिंग एंड अभी ऑफ कोर्स बजट इज ऑल्सो कमिंग. सो ये सारी चीजें मार्केट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी. सो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी के हिसाब से बेस्ड ऑन व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, बेस्ड ऑन द डेटा राइट नाउ, सो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी एट द मोमेंट लुक्स अ बिट स्ट्रॉन्गर. सो विल क्विकली लुक एट द इंट्राडे चार्ट्स, विल सी what the charts are telling. Okay, so bank nifty के लिए I would say somewhere around 48,300 will act as a first hurdle. 48,900 would be second, then somewhere around 49,600 would act as a major resistance. मतलब एक काइंड ऑफ ऐसे बोल सकते हैं कि ओके प्रोबेबली यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है अगर 49,600 को ब्रेक कर रहा है तो. Correct. So can we look at this intraday because I think like ये 75 minutes का है तो that is the positional actually. Yeah. तो अगर जो positional like जो intraday करते हैं आज ही खरीदा आज ही बेचा, so एक level उसका क्या हो सकता है? So intraday में आज के दिन का लो जो है that will become very crucial, जो भले ही वो थोड़ा लंबा हो, बट अगर आप समझे फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो समवेयर अराउंड 48,000 could be a good support level. एंड ऊपर में अगर
momentum वो build करके it is going above 48,300, then we might see a move at least till 48,500, 48,600. Again, Correct. I would like to reiterate, it is all based on what we are seeing right now on the charts, and what I would suggest is follow the research recommendations that you are continuously getting. वो अगर आप फॉलो करोगे तो वो बेटर होगा, बिकॉज जितने भी रिसर्च रिकमेंडेशंस आते हैं, द एनालिस्ट दे टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द डेटा दैट वी आर एबल टू गैदर, एंड ऑल्सो द चार्ट्स. दो चार्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी लीडिंग, बट देन अगेन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कभी कभी थोड़ी ज़्यादा क्रूशल हो जाती है. सो ये सारी चीज़ें दे टेक इनटू कंसिडरेशन बिफोर गिविंग आउट रिकमेंडेशंस. So I would also suggest to all the participants जो अभी attend कर रहे हैं, we have done the fabulous session with Dinesh Nagpal and Akshay Chinchalkar. This that was on 24th Jan. And अगर आपको उसके videos देखना हो, recap देखना हो videos का, so you can visit to this YouTube Access Direct handle, and you can see the Dinesh Nagpal and Akshay Chinchalkar fireside chat that happened on this 24th Jan on at this 4 p.m. So वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि HMO क्या होता है, हार्मोनी पैटर्न्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का आउटलुक क्या है, वेदर इट्स निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, या बैंक की बात करूँ मैं, या एफएमसीजी की बात करूँ, गोल्ड की बात करूँ, या करेंसीज की बात करूँ, एवरीथिंग ही हैज ब्यूटीफुली पोर्ट्रेड इट कि दैट ओके आपको ये कैसे लगना है, कैसे आपको देखना है कि दैट ओके कैसे ट्रेंड्स दिखा रहा है, कभी ट्रेंड ओवर होने वाला है. सो दैट इज अ रियली ब्यूटीफुल सेशन. आई वुड सजेस्ट टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स हु आर अटेंडिंग राइट नाउ, they can just go and have a recap of these sessions, because वहाँ पे उन्होंने बहुत चीज़ें कई चीज़ें अच्छी एक्सप्लेन किया कि दैट ओके एक जो एनालिसिस हम लोग करते हैं वो हम लोग को कितना ज़्यादा तक एनालिसिस करना चाहिए, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द टीम हियर दैट्स एक्सेस सिक्योरिटीज रिसर्च टीम इज ऑलरेडी देयर हु इज गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द कॉल्स एंड एवरीथिंग कि दैट हाँ यहाँ से सपोर्ट क्या होगा, यहाँ से रेसिस्टेंस क्या होगा. So that's the way like what that means each participants need to look out. So I would urge every participants who are attending right now that you can go and watch the session of this fireside chat between Dinesh Nagpal and Akshay Chinchalkar. So one thing I would like to add to that is जो दिनेश जी आए थे, he is well known for Ichimoku and harmonic patterns. Correct. So Ichimoku by default is a very powerful tool. So please do watch it and it will certainly help you. See, जैसे रोहित ने बोला कि दो हमारा research है that takes into consideration all the things, all the factors before giving out recommendation. See, एक बात होती है कि आप डिपेंडेंट हो किसी पे, एंड एक बात होती है कि आप खुद समझ कर करो. खुद समझ कर अगर आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा मल्टीप्लाई हो जाता है, विच इज समथिंग दैट आई ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड. सो दैट इज व्हाई आई गॉट इनटू टेक्निकल. सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो. Now, there is a question in from our YouTube channel that please share the view on this MRPL and Madarsumi. I would suggest you that this session is purely on the educational basis, and यहाँ पे हम लोग view दे रहे हैं on the Nifty Bank and this Nifty 50 पे. So this we are currently focusing on this कि क्या view लग रहा है हमें index का specifically, because we will be not able to tell you कि that the stock specific. I would suggest you we are having the other sessions also, so that we can take with the stocks specific, or you can drop the mail on this to our help desk at the accesssecurities.in, and they will help you on this about the stocks related query. So if you are having any queries, we'll just wait for a 30 seconds and so. And index के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना हो निफ्टी बैंक के या निफ्टी 50 के मतलब अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू बिल्ड अप अ पोर्टफोलियो जहां पर आप परचेस कर रहे हो XYZ क्वांटिटी, अगर आप एक फ्रॉम अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे कल के लिए कैरी करना इन दिस सॉर्ट ऑफ अ मार्केट वुड बी अ बिट रिस्की. So, Mehta ji, this session we are conducting only on the index expiry. I would suggest you that you can attend our upcoming session that's on 3rd Feb. That's on the post budget analysis, and there you can ask the queries about like the कि अभी ETFs में invest कर सकते नहीं, what's the right time, because budget के बाद थोड़ा और clear picture आ जाएगी सबको कि क्या budget आ रहा है and how it is helpful for you for as a common man actually to us also. So कैसे helpful है. So I would suggest you that you can post the query there, because there is a means our fundamental research head is there, that is Mr. Neeraj Chadawar, who will going to explain you about this like the entire about like the stocks, कौन से सेक्टर्स अभी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कौन से सेक्टर्स अभी नेगेटिव में रहेंगे, कौन से स्टॉक्स अच्छे पे रहेंगे, मींस ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक. So we'll end the session here. So with this, I'd like to thanks to all our participants for sharing their insight, and to the Karan also for giving such a beautiful insight, and to all the participants for engaging with us throughout this session. And we'll see you for this on the next session, that's on Nifty 50 weekly expiry
That's on this Thursday at I mean on the 30th Jan at 12 p.m. So with this, we like to thanks to everyone, and I mean stay informed, take informed investing, and be alert on this. Thank you so much, on. Thank you so much for joining us, guys. Thank you.